सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से समलैंगिक विवाह वाली जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर कानूनी मुहर को लेकर सुनवाई आज भी चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया था कि इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया जाए क्योंकि ये भारतीय समाज के प्रकृति के हिसाब से नहीं है, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें सुनवाई टालने से इनकार कर दिया है। तो केंद्र द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि इन याचिकाओं पर सुनवाई ना किया जाए, बेवजह समय बर्बाद ना किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की कल भी सुनवाई हुई थी आपको बता दें, और आज भी सुनवाई इस मामले में चल रही है। तो सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को कानूनी मुहर देने के लिए कई याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। कल भी इस पर सुनवाई चली और आज फिर से इस पर सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई ऑब्जर्वेशन जो आपको बता दें, एक एक करके बड़े ऑब्जर्वेशन सामने आ रहे हैं। टॉप कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र सरकार की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है, टॉप कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है और लगातार जो हियरिंग है इस मामले पर वो फिलहाल चल रही है। और सीधे रुक लेते हैं हमारे सहयोगी हरीश का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, लगातार आज दूसरा दिन है जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट के भीतर किस तरीके की गतिविधियां हैं, क्योंकि टॉप कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है सेंटर का जो प्ली था। Yes, the Supreme Court has, for the time being, refused to adjourn the hearing till completion of the center's consultation process with states, but has taken the application filed by Solicitor General Tushar Mehta on record and assured that will be considered later. But as of now, Supreme Court has allowed Advocate Mukul Rohtgi, who is appearing for one of the petitioners, to resume his argument. Supreme Court asked petitioners' counsel Mukul Rohtgi not to labor on the request for making state parties to the case and to proceed the argument on the merits of the case. Remember, Center had earlier the day moved an application in the Supreme Court urging the court to make all states party to the matter. In the event of Supreme Court refusing to make all states party to the case, Center said it wanted to file a comprehensive submission on the behalf of the states, and till then the matter needs to be adjourned. And so Center said it should be allowed to place the views of the state before it, as it's a vital stakeholder before adjudication of the issue. Center said the application in the Supreme Court, it has started consultation process with the states already, and then a letter with this regard was sent to all states yesterday, that is April 18th, by the Department of Legal Affairs, which has also written to all chief secretaries of states to submit their views on the same-sex marriage in case notice is not issued to them. Center said the states should submit Center said that states had been asked to submit the replies within 10 days so that the Center can present the case before. In fact, right. Remember, Solicitor General appearing for Center had said not the Supreme Court, but the Parliament has the right to adjudicate on the matter, and therefore the court should not interfere because Center has to consult several stakeholders like rural, urban population, semi-urban population, and also several religious dominations, and also study the several personal laws in this regard. Therefore, the Supreme Court should not hear the matter, and Center Parliament should be allowed to enact a law in this regard if required. But as of now, the Supreme Court has not taken the Center's application into consideration and asked the parties to continue their arguments. Back to you.